रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम एजुकेशन एंड करियर लेकर मैं सैयद ताज़ीम अब्बास नकवी अहलेबैत टेलीविजन नेटवर्क से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये प्रोग्राम हम हर इतवार को रात 8 और 9 बजे के दरमियान लाइव अहलेबैत टेलीविजन नेटवर्क से आपकी खिदमत में पेश करते हैं। इस प्रोग्राम का मकसद नौजवान और दीगर अहबाब को लेकर उन करियर काउंसलिंग, मुख्तलिफ प्रोफेशंस के ऊपर बात होती है और दीगर सियासी, समाजी और माशरती टॉपिक्स पे हम गुफ्तगू करते हैं। इससे पहले नाज़रीन, हम अपने मेहमान और सायरा नकवी को हम दावत दें। एक मैं बात आपसे अर्ज कर दूं कि इस प्रोग्राम में जितनी भी हम एडवाइस देते हैं या एडवाइस लेते हैं अपने मेहमानाने गिरामी से, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे इमिग्रेशन हो या और दीगर चीज़ें हो, वो जर्नल टॉपिक्स के जर्नल चीज़ों पर हम बात करते हैं। और जाहिर है अगर आप का कोई मसला इससे मुतालिक दरपेश है तो ये हम एडवाइस करते हैं कि आप किसी प्रोफेशनल, अगर मेडिकल की बात है तो किसी डॉक्टर से रुजू करें, और अगर कानूनी कोई चीज़ है तो किसी बैरिस्टर से, किसी सोलिसिटर से रब्ता करें। आज हमने दावत दी है, बल्कि हम पहले सहरा को खुशामदीद कहते हैं, उनसे पूछेंगे आज उनकी मेहमान कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम सहरा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया। आप, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ प्रोग्राम में होती हैं। और नाज़रीन, सहरा हमारे साथ प्रोग्राम में हर हफ्ते होती हैं और मुख्तलिफ मेहमानाने गिरामी को दावत देती हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो बात करेंगी जो नई चेंजेस आई हैं यूके इमिग्रेशन लॉज के अंदर, और उसके अलावा दीगर उनकी स्पेशलिटी क्या है। वो बीइंग अ खातून, हम कोशिश करते हैं कि खवातीन को ज़्यादा इंकरेज करें, क्योंकि हमारी बच्चियों में आजकल जो है ख़ास तौर पर ये पोटेंशियल है कि बहुत ज़्यादा कुछ अचीव कर सकती हैं। ये मैं पर्सनली समझता हूँ कि हमारी जो बच्चियां हैं, जो मस्तूरात हैं, दे हैव बेटर एम्बिशन, बेटर एटीट्यूड टुवर्ड्स व्हाट दे शुड बी डूइंग इन द फ्यूचर। और मेरी तरह जो लोग होते हैं, कुछ नालायक लड़के जो होते हैं, नौजवान, उनके लिए शायद वो नहीं है। तो सहरा, आपसे गुजारिश है प्रोग्राम शुरू करें और अपने मेहमान का भी तारुफ कराइए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, बहुत सारे लोगों ने हमें ईमेल किया कि ये जो चेंजेस आई हैं यूके इमिग्रेशन लॉ में, आप किसी अच्छे लॉयर को बुलाएं। तो आज हमारी मेहमान है लुबैना कियामी, जो अस्सलाम वालेकुम लुबैना। अस्सलाम वालेकुम। आज लुबैना इस हमें बताएंगी कि जो इमिग्रेशन लॉ में चेंजेस आई हैं। लुबैना, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। कुछ ये यूट्यूब के जो चैनल्स बन गए, कुछ उधर देखते हैं, परेशान हो जाते हैं। हमें बहुत लोगों ने ईमेल किया कि आप किसी अच्छे लॉयर को बुलाएं अपने प्रोग्राम में, और वो हमें बताए कि क्या वाकई चेंजेस आई हैं, या ये सब इट्स जस्ट लाइक बातें हैं सब इधर उधर की। तो आप हमें बताएं क्या चेंजेस आई हैं। No, of course. Firstly, बहुत shukriya for inviting me today on your show. It's a huge pleasure to be here. I will obviously pehle maazat karungi ke I will switch between English and Urdu because some That's of the okay. things in immigration, it's really difficult to then translate in कोई Urdu. प्रॉब्लम। लेकिन I'll try my best to make sure कि मैं उर्दू में ही जहाँ बोल सकूं बोलूं, so that everyone is included. Okay, so just a little bit about me. I've been practicing immigration and public law for the last 12 years, and over the years we've had a lot of changes. And obviously, if you do need to get in touch at the end of the show to discuss your personal case, or you need legal representation, then contact details will be available with Syra. So today's focus is around जो changes आई हैं within immigration law this year. And as I'm sure the viewers are aware, there's been a lot of changes this year, significant changes rather, जो सबको one way or another affect करती हैं. And I'm sure that most of your viewers already quite up to date with regards to kya changes hain, but let's talk a little bit about them in detail. Okay, so a lot of the changes जो जिसके बारे में हम बात करेंगे वो already in force हैं, so they're already UK law. Some at the end that I'll discuss, they haven't yet become law. They will be by next year or towards the end of the year. The first one is the skilled worker visa. ये जो skilled worker visa है, there's been a lot of changes to this area. The first one, quite notably, is the social care workers. There was a big sort of hype around social care workers over the last few years. Now,
you're no longer allowed to bring your dependents, that is your partner and your children, on this visa. This doesn't affect social care workers जो already पहले UK में आए हुए हैं prior to the changes, but it affects any new visa applications made from Can April you, this year. Madam, I might be interrupting you because you are speaking Yes. English, so you don't mind. I Correct. can explain it to the Yes. viewers. नाज़रीन, ये Yes. हमारी जो मेहमान है ये फरमा रही हैं कि जो स्किल्ड वर्कर वीजा में जो मेजर चेंजेस हैं वो ये हैं कि खास तौर पे सोशल वर्कर बहुत सारे वीजा इशू हुए और वो पहले ऐसा होता था कि जो आपका वीजा एज अ सोशल वर्कर लगाए तो आप अपनी स्पाउस को अपने बच्चों को लेके आ सकते थे। जो मेजर चेंज ये है जो ऑलरेडी आ चुके हैं उनके अंदर कोई चेंज नहीं है। अब जो नए वीजा इशू होंगे उसमें आप अपने डिपेंडेंट को यहाँ नहीं बुला सकते। जी लबैना। Perfect. Thank you. Thank you for that. And again, as आपने explain किया कि भाई only from 11th of March this year कि अगर आपने नई application डाली है for social care visa, you can't bring your family. Prior to this, any applications, even if it's a renewal, you can continue to support your family and ask them to join you in the UK. Another big change has been the baseline minimum salary. So पहले जो salary थी for a skilled worker visa, that was 26,200. Now it's been increased to 38,700 pounds. And the going minimum rate, which is specific to salary for each job, has also gone up significantly. Those wishing to sponsor employees from abroad now must meet this minimum salary requirement, which does depend कि आप किस sector पे apply कर रहे हो. So I can't tell you कि भाई, this is the baseline. Every baseline is different to just type of job apply कर रहे हो. But you can check on the government website कि भाई this is the type of work I'm applying for and इसकी क्या minimum rate है. And this took effect from the 4th of April this year. ठीक, Am I able यानी to इसमें continue? ये हुआ पहले ऐसा होता था कि अगर आपकी कंपनी जो है वो 26,000 पाउंड ऑफर करती थी आपको तो आपको वीजा मिल जाता था। अब नए वीजे के लिए जो कंपनी आपको लाइसेंस दे रही होगी, स्पॉन्सर कर रही होगी, वहां मेक श्योर करना होगा कि आप कम से कम 38,000 पाउंड साल के कमा रहे हो आपकी जॉब ऑफर में। जो आपकी सैलरी है थ्रेशोल्ड वो 38,000 हो। और ये भी फरमाया कि आप मुख्तलिफ सेक्टर्स के लिए मुख्तलिफ थ्रेशोल्ड हैं, तो ये एक जनरल बात नहीं कर सकते हम कि ये है। तो अगर आप मुख्तलिफ किसी यानी सोशल वर्कर के अलावा किसी और उसमें सेक्टर में जा रहे हैं, जॉब ऑफर आ रही है आपको, तो वहां के लिए आप देख सकते हैं। और बाद में खैर अगर किसी भी एडवाइस की आपको स्पेसिफिक की जरूरत है तो हमसे राब्ता कीजिए। हम अब हमारी जो मेहमान हैं उन तक आपका राब्ता पहुंचा देंगे और यकीनन हमारे अहलेबैत टेलीविजन नेटवर्क का अगर आप रेफरेंस देंगे तो कोई डिस्काउंट भी शायद मिल जाए। जी लुबैना। And as I mentioned, पहले भी जो with the social care worker visa, again same situation apply यहाँ भी होती है। जो 4th of April से पहले already UK में है, and if they want to renew or change their visa, they don't get affected by the new rules. It's only for applications made after the 4th of April. So उससे पहले you can continue to enjoy the benefits of the previous rules. बिल्कुल सही है। That's it. Sarah, if you want to translate in Urdu, I would. No, it's okay. It's better you translate. You're good at this. नहीं लोग You're very आप good. मेरे सारे सब लोग समझ I'll रहे होंगे। try to ये speak सिर्फ हमारे in एक्चुअली मैं जो कह रहा हूँ ये हमारे बिकॉज ये हमारा प्रोग्राम पाकिस्तान में भी देखा जा रहा है, इंडिया में भी, बांग्लादेश में Okay. भी, तो जाहिर है बहुत ठीक। सारी जगह देखा जा रहा है और फिर पेरेंट्स भी देख रहे हैं। तो वो कई दफा ऐसा होता है क्योंकि मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ तो मेरी भी इंग्लिश सरकारी इंग्लिश ही है, तो इसलिए इट्स बेटर टू एक्सप्लेन इट इन उर्दू प्रॉपरली सो दैट द पीपल लिसनिंग टू अस और वाचिंग अस दे just got what we actually trying to convey to them. Okay, no problem. Okay, continuing on from this, just a couple of side notes, जो really important है कि आप समझ सके. The annual salaries join jobs के लिए it's still based on the 37.5 hour working week. This must be pro rata. And it's a discussion between you and employer कि आपकी क्या hours होंगे per week. One more apology, Lubena. We might interrupting you for the phone call, so I'll take the phone call and we'll continue from it. Just hold the. Yes. Go ahead. बंद हो गई नाज़रीन, आप जो फोन कर रहे थे आप कर सकते हैं, हम आपकी कॉल लेंगे और फिर आपसे बात करेंगे। लुबैना आप यू प्लीज मे कंटिन्यू।
No problem. Thank you. Tika. Okay. So I'll move on from the skilled worker visa because the main thing जो आपको recognize करनी है कि भाई Now got the call. जी अस्सलाम वालेकुम. नकी भाई मैं नवाज भट्ट जी नवाज भट्ट साहब बहुत शुक्रिया आपका फोन करने का. आज हम बात करें, हमारी मेहमान है मौजूद. सॉरी कि मैं नहीं जी जी लुबनाना क्या नाम का लुबनाना नहीं लुबैना क्या जी जी खिदमत में तो बहुत सी माशाल्लाह गुफ्तगू हो रही है इमिग्रेशन ऑफ लॉ जो उसके मुतल्लक. तो मैं तो फ्रांस में रहता हूँ, मुझे लंदन के इमिग्रेशन लॉ का नहीं अभी पता, लेकिन मैं पाकिस्तान के मुतल्लक कुछ वजह करना चाहता था. नवाज भाई पाकिस्तान 2 4 मिनट मैं भी बात कर लूं. नवाज भाई पाकिस्तान के लिए आप थोड़ी देर बाद फोन करिएगा. पहले यूके के लॉ बता लें, फिर जनरल डिस्कशन हमारी 8:30 पे होगी, फिर आप बोलिए. मैंने कहता हूँ कि मैं आई एम सॉरी कि मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ. कोई बात तो मैं 10 मिनट बाद फोन करूंगा. जी हाँ ठीक है, 10 मिनट बाद करूँ. 8:30 बजे 8:30 यानी हमारे यहाँ भी 8:10 हो रहे हैं. 8:30 ठीक. बहुत शुक्रिया जी लुबैना. Okay, just remember कि भी अगर आपने NHS के through apply कर रहे हो, if your employer is the NHS, you may be able to reduce the salary. But again, depends कि आप कौन सी job apply कर रहे हैं. Okay, the next thing we're going to talk about is the family visas. And the main significant change to family visas for this year that has come into force from the 11th of April. So this affects all applications. जो 11th of April के बाद applicants डाल रहे हैं, which is that the minimum income requirement for someone to sponsor their partner or their spouse has gone from 18,600 to 29,000. And this will keep on going up. And then by 2025, government is hoping that the threshold will go from even 29 to 38,000. So it's really important कि if you can meet the threshold of 29, आप अभी ही apply करें. Because going from 29 to 38 is a huge jump. And it's not really eligible for a lot of people. They're trying to make it so that those affluent couples, rich couples, if you like, वो ज़्यादा ही apply करें. Anyone who doesn't meet this threshold or can't even make the savings requirement is not really then able to apply. It's basically it's discouraging for the people to come here, skilled worker base, because generally 29,000 itself is generally 29,000 even for a new grad here in UK. Starting now 29,000, it's good enough amount to get it. Yeah, I mean, everything is at the moment is being targeted like immigration to UK में है वो कम हो. So we're only going to be accepting people who are able to meet this really high income threshold. I mean, think about it. If you have just married and your income should be at least 29, usually it's not possible for the young couples, at least. It's usually not a threshold कि वो meet कर पाते हैं. Secondly, what you do, the only saving grace, I guess, if you can say that, is that अगर आपके बच्चे हैं आप apply कर रहे हैं after the 11th of April, वो जितने भी आपके बच्चे हैं in the application, उनकी additional fees नहीं होती. So previously, अगर आपने apply करना होता है, the visa fees will go up according to, and the income will go up according to how many children apply कर रहे हैं. Now it's capped at 29,000 for now, चाहे आपके जितने भी बच्चे हों. जी थैंक यू. एक कॉल ले लूं. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मैं मसूद बोल रहा हूँ. जी डॉक्टर साहब फरमाइए. हम जर्नल कॉल्स 8:30 पे लेंगे, लेकिन अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिए आप. There is a question about this immigration. Those Lubana, those spouse who already arrived because the husband is British. Those who got this 5 years residence permit and extension for the second 5 years permit, is it still essential for the second year? Husband? No, you don't. If you've already in the UK and you've already got a spousal visa and you're looking to extend it, you will still have to meet the minimum threshold of 18,600. The new rules don't apply to you. It's only for applicants after the 11th of April.
जी, मैं यहाँ एक जनरल बात नाज़रीन आपने देखने वालों के लिए बता दूं कि एक बात ज़हन में रखिए कि अगर आपको किसी कैटेगरी में प्रीवियसली वीज़ा मिला है, तो आपके लिए कुछ चेंज नहीं हुआ। ये उन लोगों के लिए हो रहा है जब अगर मिसाल के तौर पर आज 13 अक्टूबर है, अगर आज किसी ने अप्लाई किया है तो आज का जो रूल है उस हिसाब से उसको वीज़ा मिल गया। 15 अक्टूबर को जो चेंजेस आएंगी आइंदा भी फ्यूचर में भी उसको एक्सटेंशन के लिए भी और अदरवाइज भी 15 अक्टूबर वाली चेंजेस उस पर अप्लाई नहीं होंगी। तो ये जनरल रूल ज़हन में रखें कि अगर आपने अप्लाई किया है या आपको वीजा उन तवारीख से पहले मिल गया है तो कोई चेंज नहीं है। जब नए लोग उसके बाद अप्लाई करेंगे ये उन पर अप्लाई होता है। लुबैना, एम आई राइट? That's correct. That's correct. ओके, प्लीज कैरी ऑन। Okay. Now, again, the same everything else, just spousal visa mein hota hai, that stays the same, providing proof of your adequate accommodation, providing proof that you'll be able to look after the person who's joining you, your partner, without recourse to public funds. आप savings भी दिखा सकते हैं if you can't meet the income threshold. It is a little bit complicated with savings, but there is still that option, and I can go into more detailed if you want to talk about cash savings. But it doesn't always apply to everybody. I mean, with cash savings, the same rule as before, only savings above 16,000, usko divide karen by 2.5, that will be your threshold that you need to show if you can't meet the income threshold. So again, this is really for people who can, I mean, if you think about the amount of savings you also need to show, which have to be जो आप easily access कर सकते हैं, not savings जो are held up somewhere else and आपके पास access नहीं है, or they saved in a different account and you can't access this. It has to be savings जहाँ आप immediately withdraw कर सकते हैं if you need to. Again, it's not aimed at people who are on low income, for instance. And that's the main changes with the family law. I also want to make sure कि थोड़ा सा time निकालें to talk about domestic violence, because that's another change that happened this year. And I think this is more, it's inclusive. We're not just talking about women affected by domestic violence. We're talking about also men affected by domestic violence. But we're talking about the issue of domestic violence at the moment, which has also taken a huge change this year, significant change. Still lobbying to make sure that all other changes are in, because even I believe at the moment the changes are in with domestic violence, it's not enough, but it's a step in the right direction. So previously, as you may or may not have known, कि पहले हमारे पास होता था something called the DDVC, which is the Destitute Domestic Violence Concession. I always get that wrong. And what this DDVC does is that if you are in the UK as a partner or a spouse of somebody who is British or settled meaning uske paas agar ILR ho, you can, if the marriage breaks down because of domestic violence, and remember, domestic violence sirf ye nahi hai ke bas haath uthaya ya mara pita. It's also agar physical violence nahi hai khali, it could be mental just torture, physical, it could be harassment, it could be yeah. blackmailing, it could be anything like Yeah, that. exactly. So there's a lot of things around domestic violence. It's not just limited to, as you said, physical violence. If you are suffering this and you need to leave that relationship, and most of the time, हमारे clients उस relationship को छोड़ नहीं सकते because they feel कि भाई मेरे पास one पैसे नहीं है, second मैं कहाँ जाऊँगा, second I don't have any income, so who will support me? अगर बच्चे हों तो और मज़ीद problems होती हैं. You can apply for this domestic violence concession. It's been changed now to the Migrant Victims Domestic Abuse Concession, so the MVDAC. The MVDAC is the same as before. You have 3 months permission to stay in the UK. आपका जो current visa है, which is spousal visa, that will end and you will have a 3-month temporary visa. On 3 months के अंदर, you must apply for another immigration application. The change that's happened this year is that previously only those partners and spouses, जिनके partners British हैं या settled हैं, वो apply कर सकते थे. Now it's been extended to EU citizens
as well as British citizens and settled persons, it's also extended to EU citizens and anyone jiska partner or spouse is on a work route visa or a student visa. So those spouses and partners can also now apply under this domestic violence concession. And again, आपका जो current visa है, so I'll give you an example. अगर आप UK में आए हैं and you're married to somebody जो work visa पे है, the marriage breaks down because of domestic violence. If you are here in the UK as his dependent or her dependent, आप apply कर सकते हैं under this route. You will get a 3-month visa. आपका जो current visa है वो खत्म हो जाएगा. You get this 3-month visa. The only difference, and the biggest difference, is that at the end of the 3 months, जिनका husband या wife who are British or settled, वो apply कर सकते हैं indefinite leave to remain के लिए. Anyone else, they will have to make any other application. They can't make the indefinite leave to remain application. So that's the ठीक है, biggest change. ठीक है. And इससे that's a पहले तो है ना, significant change. वी गो फर्दर, डोमेस्टिक वायलेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है और सहरा जो है ना पे कुछ कहना भी चाहती हैं और इनके पास बहुत सारे केसेस हैं ऐसे कि जो खास तौर पे बच्चियों को पाकिस्तान से यहाँ बुला लेते हैं और यहाँ पर उस वक्त तो बड़ा अच्छा लगता है, सारा कुछ सब कुछ हरा हरा लग रहा होता है. जब यहाँ आते हैं या वो बच्ची मिसाल के तौर पर परेशान हो जाती है या बच्ची, आइदर वे में. पहले सहरा आप उस पर थोड़ा बता दें और फिर आप लुबना से भी पूछ सकती हैं. लुबैना, सबसे पहले तो ये है कि ये वहां पे बच्चियां जो है, हर एक को यही होता है कि मेरी बच्ची शादी करके यूके चली जाए. अच्छा, अब बच्ची जब यूके, अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सारा वक्त मर्द खराब है. बच्ची जब यहाँ आ गई, अब वो यहाँ पे तो आजादी है, आप सब कुछ अपनी मर्जी से कर सकती हैं. तो देन व्हाट दे स्टार्ट इज, वो घर से गायब हो जाती है क्योंकि Because दे of डोंट वांट टू because of स्टे विद. domestic हाँ, violence or ये just because मैंने, they want हाँ, मैं आपको बता रही हूँ कि अपना मोबाइल जो है वो बंद कर दिया, सिम चेंज कर दिया, व्हाटएवर, और ना अपने इन लॉज के साथ कोई राब्ता रखा और वो बच्ची गायब हो गई. अब इस केस में क्या? अच्छा, एक और बच्चियां जब यहाँ आती हैं तो ऑब्वियसली यहाँ का माहौल बहुत ओपन है, दे कैन डू व्हाट दे फील लाइक. अब हस्बैंड ने जरा से सख्ती की या कुछ है तो वो एक प्रॉब्लम. दूसरा ये है कि हस्बैंड चाहता है कि मेरे तरीके से जिए जिस तरह से मैं चाहता हूँ, लेकिन बच्ची नहीं उस तरह से जीना चाहती. शी वांट्स टू बी मोर ओपन लाइक. पाकिस्तान में कभी जीन्स नहीं पहनी थी, टॉप नहीं पहना था, यहाँ पहनना चाह रही क्योंकि शी लाइक्स इट. ऐसे लोगों का क्या होगा फिर? I mean, Sarah, it's a little difficult because if you are अगर आप UK में आए हैं as a someone who sponsored you, the sponsor has every right कि अगर आपने घर छोड़ दिया and you have no contact and you reasonably Yeah. believe कि मेरी शादी actually खत्म हो गई है because लड़की is not interested in me and she's not having any relationships with me, I would say give it a reasonable period of time before you decide कि the relationship खत्म हो गई है, and then inform the Home Office कि look, this is somebody I sponsored and they are Okay. not in the UK now. I'm sorry, they are in the UK, I believe, but we have no relationship. The relationship from my end has finished. Inform the Home Office because it's you're the sponsor. So you do have a responsibility to inform the Home Office and take due action where it's necessary. As far as the girl is concerned, unfortunately, she's on a limited leave to remain visa. So if she's not meeting the conditions of her visa, i.e., in a relationship with this person, then she no longer meets the conditions of her visa. So the Home Office will take the necessary action to curtail her visa. So she'll be given a 28 days notice कि अगर तुम दूसरी application डालना चाहती हो तो डालो, वरना 28 days के बाद you'll be required to leave the UK. And then it's up to her कि वो क्या करती है, whether she makes another application, whether she joins somebody else and makes a new application for a spousal visa. But as far as both parties are concerned, this is probably the best route to take. Now, another situation which you mentioned कि अगर वो UK से आई, पाकिस्तान से आई है and माहौल different है, depends कि वो demands क्या है. Is he demanding in an aggressive way, which she feels is unreasonable, and we're coming onto the territory of domestic violence, then I would probably say, Kibi, as far as the girl is concerned, she really should take legal advice.
maybe should even think about speaking to one of the lots of different charities that are available जो बात कर सकती हैं आपके साथ. That doesn't mean कि आप action ले रहे हो. It just means you're having a conversation to say, look, this is a situation. Do you think I'm suffering from this? Do you think I can get some help? There could be mediation. It doesn't have to also necessarily mean कि भाई खत्म हो गई है शादी या because उसने कहा कि jeans पहन लो. It just means that let's have those conversations. There's so many different organizations I can tell you about that help couples to actually make an informed decision rather than the last decision. And if ये it बहुत still अच्छी doesn't बात work, कही आपने लुबैना। एक बात ऐड कर दूं, सॉरी आपकी बात कट रही है नाज़रीन। लुबैना और सहरा जो बात कर रही हैं वो तो एक लीगल बात कर रही हैं और कानूनी बात कर रही हैं। मैं इखलाकी आपसे कह रहा हूं कि अगर आप पाकिस्तान में लड़की हैं, फॉर एग्जांपल लड़की के लिए आ रही हैं, लड़की को ब्याह के ला रहे हैं, तो जो ब्याह के ला रहा है वो पहले बता दे के देखें जी आप वहां जाएंगे तो मैं ये चीजें चाहता हूं, ऐसी मेरी लाइफ है, अगर आप उसमें एडजस्ट कर सकती हैं तो आप वेलकम है, अगर नहीं कर सकती तो आप अपनी जिंदगी भी खराब करेंगी, मेरी भी करेंगी। अब इस जल्दी में कि लड़की या लड़का बाहर जा रहा है, उसका वीजा लग रहा है ना, पाकिस्तान में आप पूछते हैं कोई ज्यादा कुछ लड़के के बारे में या लड़की के बारे में, और ना बस जल्दी कोशिश करते हैं कि किसी तरह वीजा लगे और बाहर चले जाए और बाद में फिर परेशानी हो। तो उससे बेहतर यह है कि जिस वक्त आप लोग बातचीत कर रहे हो रिश्ते के लिए या शादी के लिए, उस वक्त आप अपनी अपनी चीजें बता दीजिए खुल के, और जब दोनों अग्री कर लें तो फिर आइए, ताकि इस तरह ना लड़की को परेशानी हो ना लड़के को। इज इट सहरा, एम आई राइट, और इसमें कुछ ऐड करेंगे आप? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे। एक और बात है रुबैना, कुछ लोग तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द मैरिज, ओके, एंड दिस इज लाइक आई नो वेरी वेल, देयर इज नो डोमेस्टिक वायलेंस, बच्चे भी हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, मगर जस्ट पता नहीं क्यों, आई हैव नो आइडिया, दे जस्ट स्टार्ट सेइंग कि नहीं मेरा हस्बैंड बहुत बुरा है, मुझे बहुत मारता है, क्योंकि वो नहीं रहना चाहते या कुछ है। तो मतलब इसके लिए क्या कोई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि वाकई ही ये सच है या औरत के ऊपर जुल्म हो रहा है, तो दे फील सॉरी फॉर हर बीइंग अ वुमेन कि ये पाकिस्तान से आई है बिकॉज शी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, और वो अपना रोना धोना जो है। तो इसके ऊपर क्या कोई ऐसा है कि फर्स्ट दे शुड इन्वेस्टिगेट एंड देन मूव फॉरवर्ड, ऐसा है कुछ? I mean, look, Sarah, at the moment, the current climate and the hostile environment that we have from the Home Office is that there is a lot. I mean, I don't need to come on the show to tell you, Kibi, how much violence there is against women and girls in the UK at the moment. Just alone in the UK, let's forget about the globally. We have so many cases where women are treated horribly, murder, manslaughter, anything. That's There's a true. lot of awareness now about how much women and girls are suffering, whether it's forced marriage, forced procedures on women, whether it's being forced to stay indoors, not work, even saying to a woman कि भी आप काम नहीं कर सकती, that's a form of domestic violence. And I think one of the things you have to remember is कि भी in this climate where we're trying to support women and girls who are facing such issues, it's not कि भी आपने कह दिया सो हो गया. Okay, unfortunately, इस तरह नहीं चलता कि भाई आपने कह दिया कि वो मुझे मार रहा है and then मैं कहूँगी that's fantastic, let's just do the application. Obviously, there's a lot of in organizations to help करती हैं women who say कि भाई we are a victim of domestic violence. So it's the first point of call is getting the support. That doesn't mean कि भाई आपको support मिल रही है तो आपके हम help करेंगे वापस जाने में उस abusive situation में. It means that we will help you to take the next steps forward to be able to better your life. Okay? Now, when it comes to the Home Office, unfortunately, as much as I advocate for women's rights, it's not enough for a woman to say to me, कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ. My duty is I will always believe my client. But the Home Office take a very different view. They won't investigate as such physically, but they will ask you for at least 5 different types of evidence, independent evidence, to prove that you're a victim of domestic violence. Whether it's you Yes. going to the police
whether it's you going to a different organization, whether it's you even telling your friend, कि look मेरे साथ ऐसे हो रहा है, and your friend giving a witness statement to say कि भी वाकई इसके साथ ऐसे हुआ था because she told me about it. I deal with so many different cases for domestic violence. It's one of my specialities. And the number of clients that we get who unfortunately come through the door and are not able to give you any evidence, because unfortunately ये इस type of ये cases होते हैं कि भाई आप उस वक्त तो नहीं ना सोच रहे होते कि मैं क्या evidence जमा करूं proof करने के लिए कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है. It's a very human sort of situation. In that situation, the first instinct isn't to pick up your phone and start videoing something or start putting the text messages together and saving them. It's such a difficult part of your life. You know, it's not something that jo log easily record bhi kar sakte hain, you know, physically record, whether it's documents or whether it's a video. So it's not Gibi. Unfortunately, with the Home Office, we have to take a little bit of a harsh stance. Gibi, wo automatically aapko believe nahi karenge. They need to see proof ke waqahi aise hua hai. I'm not saying Gibi proof dikhao ke wo aapko maar raha hai. I mean, if we really want to get down to the basics, I'm not sure asking you to show this, but we do ask our clients to. Let's think about the evidence that we can get. Every evidence that a client provides us is always subjective. Because every case is different. कहीं कुछ ज़्यादा जुल्म है, कहीं कुछ कम जुल्म है, लेकिन end of the day जुल्म है. It's not कि नहीं है, it's just कितना है. Are we going to a police or are we just going to a counselor to talk about our problems? Are we going to the GP to tell him कि भी look मेरे साथ ये हो रहा है? Or are we going to the hospital because वाकई कुछ significant injuries आ गई हैं which require medical attention? Every case is different, but no case is the same. And even if you feel कि भाई छोटी सी बात है, that छोटी सी बात आपके लिए होगी, but actually it's a big thing. And we do need to talk about it. We do need to have conversations with our women and girls, because whether it's forced marriage or whether it's jeans na pehno, let's have a chat कि भाई where is, you know, is there violence, is there abuse, is there coercive control, and that's what the Home Office is more interested in now tackling. And that's why we had a big change in immigration law this year with the MVDAC to include migrant women, not just including spouses of British nationals, but including migrant women. A woman jo aati hai on a student visa, agar uska husband usko mare, why is she excluded from this provision? Why can't she get help as well? Why is she excluded just because she's a migrant woman? A woman, sorry. And I think those are really important conversations to have, and everyone will have their side of the story. Obviously, if I'm dealing with a victim of domestic violence, I'm not going to be listening to her husband's side of the story. My duty is towards my client, but you, Zaira, might be listening to the other side and deciding, actually, itna to hua hi nahi hai, to problem kya hai? But I think do need to raise awareness about the issues that women face. I mean, domestic violence is not discriminatory. It's not going to be only women suffer it. Of course, men suffer it too, in all walks of life. It's not something that is going to be sort of औरत ही, you know, जुल्म सह सकती है. It's मर्द भी, you know, they are also a victim of domestic violence. Obviously, I only support. जी अस्सलाम वालेकुम. अस्सलामुअलैकुम सर जी. वालेकुम अस्सलाम. कौन सा बोल रहे हैं सर? रोजगार से बात कर रहा हूँ सर. जी चॉइस साहब फरमाइए. मेरी दोनों बहन को बहुत बहुत सलाम. वालेकुम. हमारे हैं कि हम मुसलमान लोग हैं जी. हमारे यहाँ वायरस नहीं है. ये है कि लैक ऑफ एजुकेशन जी. लैक ऑफ के हम लोग जो मेरी बेटियां पाकिस्तान से आती हैं जी, दूसरे रीजन से आती हैं जी, शादी करते हैं वो मतलब के लिए कर लेती हैं जी. फिर वो डेफिनेशन आप मर्दों को नहीं दे सकते. मर्द क्या करता है कि अपनी जिंदगी की जो जमा पूंजी होती है उसके हाथ में देता है कि यू बी माइन. ठीक है. एंड के डे जो अगर ब्लेम देना मर्दों को तो नहीं दे सकते ना हमेशा ही. ठीक है. कुछ औरतों का भी तो फर्ज बनता है ना जी. जब वो आपका सारा कुछ ले लेती हैं उनका वीजा हो जाता है then they think back, oh we man is old, we used him and we go back, we got married and we family days. ठीक. This is the real issue. ठीक है. कि कोई भी फोर्स मैरिज नहीं करता है. ये हमें आप पे डाला गया है हमेशा लोगों पे कि फोर्स मैरिज है क्या यार. ये सब झूठ का एक ड्रामा है हमें बदनाम करने के लिए. ठीक है चॉइस साहब.
नो थोड़ी सी बात सुन लेना। जी जी बिल्कुल नहीं काटना। जी जी बिल्कुल बोलिए। Most marriage in this century nobody can do it. ठीक है। Maybe ये 1980s 70s क्या है कि मेरे चाचे का पुत्र है, मेरी मासी का पुत्र है, चाहे आप शादी कर। ठीक है। Then yeah, no in this century. ठीक marriage नहीं है, this is offset marriage और they wanna ठीक है जान के मैं इस पे करता हूँ। हाँ जी जी मैं करता हूँ, आप आपको टैकल करना चाहिए जी मैं करता हूँ, आप देखिए। हर एक एज को एजुकेशन होनी चाहिए, मैरिज करनी है, कोई भी आपको फोर्स नहीं करता। हम लोगों को बदनाम ना किया जाए। ठीक है। हमेशा लोगों को कर करके बहुत कर लिया बदनाम। ठीक है चौधरी साहब आप सुने, मैं इसको आप ही की बात को आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है वी नीड टू चेंज आवरसेल्फ। ठीक है। मैं लुबैना बिफोर यू स्टार्ट मैं चौधरी साहब की बात आगे बढ़ा दूं। देखिए वो नाज़रीन सही फरमा रहे हैं कि देखिए शुरू में तो लड़का लड़की दोनों की बात कर रहा हूं मैं। एक कॉल और आ गई है, पहले इनसे बात कर ले फिर करते। लुबैना आई एम सॉरी, हमारा लाइव शो होता है, कॉलर हमारे आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी नवाज भाई आप बोल दीजिए। जी नवाज भाई बोल दीजिए, फरमाइए। ये है कि बहुत ही अच्छी बहुत कारामद बातें बता रहे हैं जी ठीक, और इस पर आप अमल करें, बल्कि इसको प्रैक्टिकल में लाए, सिलसिले में को दिए बहुत लोग कामयाब हो जाएंगे। ठीक है। अभी लोगों को इन बातों का नहीं इल्म। जी हाँ बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले बाजी सायरा को सलाम पेश करता हूँ, उसके बाद वालेकुम सलाम। यानी में और मैं पाकिस्तान के मतलब कुछ बात कर लूं। जी फरमाइए, आपने पहले कहा था, अब हमने वादा किया था, अब आपको बोलने देना पड़ेगा हमें। मुझसे बेहतर है ये जो कारगर बातें बता रही है मेरी बेटी। जी फरमाइए। और बाजी सारा बता रही है, इस मेरी गुफ्तगू से बेहतर है। बरानी वे पाकिस्तान के भी मामला को देखना चाहिए। जी फरमाइए। ये तो हो गया यूके का इमिग्रेशन लॉज। ठीक है। और वतन अजीज की सियासी और माशी सूरत हाल को देखकर बड़ा दुख हो रहा है। अच्छा। बहुत दुख हो रहा है। अच्छा। बहुत ही दुख हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ मुल्क के खुद साख्ता मक्कार और करप्ट सियासी लीडरों के सबब ऐसा हो रहा है। अच्छा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के पाकिस्तान को इस इक़्तिदार के भूखे सियासी लीडरों ने आइन की खुला वर्दी खिलाफ वर्दी कर रहे हैं। ठीक है। और इस पर मुल्क पर जबरदस्ती कब्जा जमा रखा है। अच्छा। इन दोनों सियासी पार्टियों के खानदानों नवाज शरीफ एंड कंपनी और असर अजरदारी एंड कंपनी ने अपनी मनमानी करके मुल्क को चला रहे हैं और बैरून मालिक से कर्जे लेकर मुल्क को चला रहे हैं। लेकिन आजकल तो नवाज भट्ट साहब मैं देख रहा हूँ, आजकल तो बड़े 14-15 मुल्कों के सरबराह मुमलिकत आ रहे हैं, बड़े रशिया चाइना सब इनकी कॉन्फ्रेंस हो रही है कर्जा मांगने के लिए। वो कशकोल आगे नहीं, लेकिन वो तो वो आ रहे हैं ना, वो ये जा नहीं रहे, वो आ रहे हैं। पाकिस्तान में 74 के बाद बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है जहां पर इंटरनेशनली सरबराह मुमलिकत आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है वो यानी कर्जा देने आ रहे हैं पाकिस्तान, या ये लोग वहां मांगेंगे कर्जा? इनकी मक्कारी है, ये कर्जा ले लेकर मुल्क चला रहे हैं और यशे कर रहे हैं। अच्छा। इस वक्त पूरा मुल्क महंगाई के तूफान से की जद में है, लोग मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। 34% से बट साहब 34% से कम होके महंगाई 9% आ गई है। अच्छा नहीं ये जितनी ये बातें कर रहे हैं ये सब झूठ है। अच्छा। बिल्कुल झूठ, यकीन जानिए। अच्छा। अल्लाह नोज। ठीक। ये स्पाइट ऑफ इफेक्ट दूसरी तरफ पाकिस्तान की खुद साख्ता अदलिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहना नहीं छोड़ रही पाकिस्तान के लोगों का, लोग को मार देंगे। चले वहाँ भी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, आप कह रहे हैं। ये फौज है, बुज़दिल फौज। हमारे जो ना जवानों को निकाल कर जवानों फ्रंटियर में ठीक है। ठीक है नवाज मुल्क पर कब्जा जमा रखा है। बदनामे जमाना पुलिस और बुज़दिल रेंजर्स के जुल्म सितम और तशद्दुद के सबब अवाम बेबस हो गए। और बात ये नहीं कर सकती, इनके बेसिक फंडामेंटल राइट्स सलब कर रखे हैं। ठीक है। अवाम मौजूदा करप्ट हुकूमत। बट साहब मेरी गुजारिश भी सुन लीजिए। बट साहब मेरी गुजारिश भी सुन लीजिए। बहुत शुक्रिया, आपने अपने ख्यालात का इजहार कर दिया। जाहिर है आप जो कुछ कह रहे हैं आपने जाहिर देखा होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने जो देखा है वो ये देखा है कि इस वक्त पाकिस्तान में 14 ममालिक से ज्यादा के जो हेड्स ऑफ द स्टेट्स हैं वो आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है। उसके अलावा जो यानी शुमार है हमारे पास 34% महंगाई थी, अब 9% हो गई है।
उसके अलावा एक कॉल और आ गई है तो हम ये कर लेंगे, हमारी इमिग्रेशन की बात पे आ जाएंगे दोबारा हम इस कॉल के बाद। लुबैना प्लीज डोंट माइंड। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं शफीक बोल रहा हूँ। आपका प्रोग्राम शफीक बहुत भाई अच्छा है। जी बोलिए। मैं बोलना चाहता हूँ जी कि हम एक ब्रिटिश लड़का हाँ बांग्लादेश और पाकिस्तान जाकर शादी करेगा, ओके उधर का भी एजुकेटेड लड़की होगा, ठीक है अब इधर आएगा ना अंकल, हाँ तो हमारा स्किन जो क्लीन करता है ना, उसका सफेद स्किन कलर होता है। ओके अभी बोलता है कि तुम्हारा सब कुछ मेरा प्राइमरी स्कूल का सब कुछ ले गया क्वीन ने, क्वीन का हक मुझे मिलता है, क्वीन अच्छा के साथ मेरा रिश्तेदारी होगा, मगर मेरा डिवोर्सी वाइफ को ये जो दाखिल वाला खराब करता है, एवरी मॉर्निंग देखता है, उसका नफरत में ये सफेद स्किन एंड ब्रिटिश हमारा बांग्लादेश में जो एक लड़का दूसरा लड़की को शादी करता है, उसका हमनाम देखते हैं, जो उसका हमनाम सामान है, ठीक है कुछ नाम के कीड़े ठीक है देखते हैं। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो हम बात वहीं से शुरू करते हैं जो चौधरी साहब कह रहे थे कि जिस वक्त शादी का वक्त होता है ना, यानी वीजा लगने का वक्त होता है ना, उस वक्त लड़की के कोई ऐब नजर आ रहे होते हैं ना, कोई लड़की के ऐब नजर आ रहे होते हैं। जैसे ही 5-6 साल पूरे होते हैं वैसे ही लड़के में ऐब होने लगते हैं और लड़कियों में भी ऐब होने लगते हैं। ये असल बात है। कॉल भी आ गई है तो पहले कॉल ले लेते। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम मेरे भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन सा बोल रहे हैं सर? जी चौधरी साहब आप ही की बात अभी की है मैंने। थोड़ी सी मेरी सुन लो, थोड़ी सुन लो क्योंकि आप सियासत में ले गए हैं। अच्छा तो मैं आपको थोड़ा सा पाकिस्तान के बारे में नहीं, मैं उसी की मैंने अभी ये कहा कि जब शादी कर रहे होते हैं, चौधरी साहब मेरी बात सुन लेना फिर आप बोलिएगा। मैंने ये कहा कि जिस वक्त चौधरी साहब मेरी बात तो सुनिए, आप 1 मिनट मेरी पहले बात सुन लीजिए। मैंने ये कहा कि जिस वक्त आप शादी कर रहे होते हैं ना, लड़का लड़की दोनों तरफ से, ना लड़की में कोई लड़के को ऐब नजर आ रहे होते हैं अगर उसको वीजा चाहिए, और ना ही लड़के को लड़की में कोई ऐब नजर। जैसे ही 5 साल पूरे हुए, इंडेफिनेट हुआ, फौरन लड़का बूढ़ा नजर आने लगा, लड़की जो है वो जो है ना उसमें कोई किसी किस्म की कोई जो है ना छाई नजर नहीं आती और फिर लड़ते हैं। अब बोले आप। जी मेरे भाई, यही तो हमारी ये फेलियर है ना हमारी नेशन में। जी मैं आपको और नेशन की तरफ लेके जा रहा हूँ। बताइए, जल्दी बताइए, हमारी मेहमान बैठी नहीं है। सऊदी अरेबिया 5 साल पहले पाकिस्तान बहुत मुश्किल में था जी। IMF का जब प्रोग्राम नहीं हो रहा, अभी भी मुश्किल में है, अभी मुश्किल में। सऊदिया के लोग आए हैं, उन्होंने कुछ किया है, ऑफर किया है। जी जी क्यों किया? आप सुनते हैं, जी आप पढ़े लिखे लोग हैं। जी हाँ ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है ना, जी जी आप समझते हैं कि सुपर पावर के कहने पे हो रही है। अच्छा, ईरान से दबाव था, यू ओनली वन मुस्लिम कंट्री। चाइना रशिया भी तो आ रहे हैं वहां पर, वो सब अमेरिका के कहने पे आ रहे हैं। दिखावा है यार मेरे। नहीं वो तो सही है, लेकिन आप कह रहे हैं ना वो अमेरिका के, वो कह रहे हैं सुपर पावर के कहने पे आ रही, तो चाइना रशिया इनके सुपर पावर की वजह से आ रहे हैं। मेरे भाई, चाइना रशिया किसके अंडर है? सुपर पावर के अंडर। अच्छा, ये बातें आप जितनी भी कर रहे हैं, जी जी, गेम खेलता है पूरी दुनिया में जितनी खेल सकता है। अच्छा, तो इसका हल बताइए चौधरी साहब। हल ये है कि 2 फैमिलियों को आप मुल्क बदर कर दें। अच्छा, फैमिली, नवाज शरीफ फैमिली ठीक है बदर कर दें जी, और अपने अच्छे से लोग लेके आए। तो ये बात इमरान खान साहब जब आए थे तो उन्होंने क्यों नहीं किया? उन्होंने आपको नहीं मिलेगा, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं किया? मारेंगे यार उसको क्या कर सकते हैं? नहीं, जब हुकूमत में थे तब कर लेते ना। मेरे भाई मेरी बात सुना, मैं उस आदमी को 1970 से फॉलो कर रहा हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चले चौधरी साहब, ये खैर आज हमारा पॉलिटिक्स पे प्रोग्राम नहीं था। थैंक यू वेरी मच चौधरी साहब, आपकी बातें बहुत अच्छी। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम यही टॉपिक रखेंगे 8:30 बजे के बाद डिस्कशन का, तो हम इसी के ऊपर बात करेंगे। आज हम हमारी मेहमान आई हुई है जो बात करना चाह रही है यूके इमिग्रेशन लॉ पे, डोमेस्टिक वायलेंस की आप बात कर रही थी लुबैना, कि ये जरूरी नहीं है कि खातून जो है वो अफेक्टेड हो, मर्द भी अफेक्टेड हो सकते हैं। अगर आप, यानी बीइंग अ मर्द, मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आपकी बेगम आपको इसलिए ब्लैकमेल कर रही है कि देखो तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं जाके कह दूंगी कि डोमेस्टिक वायलेंस है। कई दफा ऐसा भी होता है कि मेरे पैसे भेजो मेरे माँ बाप को या मेरी
बहन भाइयों को, वरना मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। तो ये दोनों साइडों पे चलता है। और जैसे लुबैना ने कहा कि ये खाली ऐसा नहीं है कि कोई मर्द जाके कहे कि जी मैं अफेक्टेड हूं तो वो कहेंगे हाँ ठीक है जी हो गया, या कोई खातून जाए, बल्कि आपको एक अपना केस पूरा जो है वो बनाना भी पड़ेगा, दिखाना भी पड़ेगा, प्रूव भी करना पड़ेगा। अब बोलिए अब लुबैना आप। I think I've touched a nerve with your callers. Actually, this is actually, unfortunately, Lubena, or fortunately, this is live program, and we are lucky enough to have wonderful callers who obviously express themselves, and we learn from each other. There are so many, angles, come from different ways that we feel that we are sitting in a class and learning something. So we are learning something from you as well. Please go ahead. No, I mean, I think it's important to raise awareness about domestic violence, because a lot of the times, हमें पता नहीं होता कि behind closed doors क्या हो रहा है. And it's really important to give anyone who's a victim of domestic violence the platform to speak, to express, and to talk about what it is they're feeling. And I know we have a lot of cultural views about this, but culture aside, end of the day, nobody deserves to be abused. And that should be the baseline of any discussion. But again, with the domestic violence concession, it's in force from February of this year, which means from February of this year, if you are a victim of domestic violence and you are in the UK as even a dependent of somebody who's working or studying, आप ये use कर सकते हैं this concession to your benefit. आपको 3 months के लिए access मिलता है public funds. You can access public funds. You can access refuge accommodation अगर आपको accommodation की ज़रूरत हो. You can also engage social services. You don't really need the concession to engage social services, but अगर बच्चे हैं तो social services को भी engage आप कर सकते हैं कि वो आपकी help करें. And it's really important to get legal advice before you even apply for this concession, because you need to know at the end of the 3 months, मैं कौन सी application डालूंगा for which immigration application am I going to put in? Am I eligible for indefinite leave to remain, or am I eligible for any other applications? Even if it's asylum, for instance. But this 3 months is a breathing period for this victim to be able to decide कि मैं आगे क्या करना है. And it's such an important breathing space, because often we can't leave the abusive home unless we know कि मेरे पास आगे जगह होगी रहने के लिए, or will I be street homeless? And I think it's a really powerful tool to use, but do obtain legal advice before you use it. But yes, that's one of the big changes for victims of domestic violence this year. Lastly, student visas. As you know, the major change for student visas was January this year, when you're no longer able to bring your dependents अपने बीवी या बच्चों को नहीं लेके आ सकते after the 1st of January of this year. Unless you are doing a PhD or any other doctorate up to level 8, or you're doing a research-based higher degree. Those applicants can still bring in their spouses and children. But this doesn't, as you mentioned before, affect any students who are already in the UK prior to January 2024, or anybody who needs to extend their visa or move on to the work category. However, from January next year, the financial requirements for international students change हो रहा है. So it's going to change because it's going to reflect the higher cost of living we have in the UK now. So abhi students must show £1,334 per month Maintenance if they're in the UK. And if they need to show £1,023 if they're living outside of the UK, from next year. Please, एक कॉल ले. जी अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम सर जी. वालेकुम अस्सलाम जी सर. हमारे पास बहुत कम है. जी बात करते हैं कि मेरा अफजल खान क्या नहीं है पीए, मेरा भाई भी है, दोस्त भी है, बचपन का है, मेरा कजन भी है. ठीक है. मैं एक ही बात करना चाहता हूँ. रशी सुनक ने 100,000 से ज्यादा वीजे अलाउ किए पहले. ठीक. 6 केयरिंग वीजे और ये जो वीजे हैं इंडिपेंडेंट वीजे ऑफ एजुकेशन है, स्टूडेंट वाले अपने सारे लोगों को बुला के उसके बाद इसने चेंज किया. अच्छा.
ये उसकी गलती है। अच्छा, ये अपनी नेशन को, अपने लोगों को नहीं हम कह सकते कि उसने चेंज क्यों किया है। ये आफ्टर कोरोना वायरस जब इनको बंदे चाहिए थे 100,000 से, हम मोर देन 100,000 वीजा, अच्छा, डिपेंडेंट वीजा, ठीक है, kid comes with it. ठीक है, More than 700,000 or 800,000 people came in the UK. ठीक, No, they cannot find a job. They cannot survive in the UK because it did overdo. ठीक है चौधरी साहब, because 30 वर्ग उससे करवा लिया, अब उसको प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं। ठीक है चौधरी साहब, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। आपकी बात हमने गवर्नमेंट का फेलियर है ना। जी मैं लुबना बैन से कहना चाहता हूं जी मैम, हम बताएं, थोड़ी रोशनी जी डालें। जी बताएं, ठीक है मैं बताता हूँ, पैंडेमिक आफ्टर द कोरोना वायरस, ठीक है हम मैम, हम पूछते हैं, एवरीबॉडी ओवर, ठीक है मैं पूछता हूँ चौधरी साहब। थैंक यू वेरी मच चौधरी साहब और सारे नाजरीन। हम इस वक्त यहाँ बैठ के ये नहीं डिसाइड कर रहे कि ये जो चेंजेस आई हैं, आया ये चेंजेस सही हैं या गलत हैं, या ये किस वजह से हुई हैं, या कौन बेहतर कर रहा है। हम इस वक्त बात कर रहे हैं जो चेंजेस आने वाली हैं उसकी वजह, वी आर नॉट होल्डिंग एनीबडी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। देखें, इनका एक लॉ, ये इनकी एक सिस्टम है, उस सिस्टम में ये लॉ लेके आते हैं, हमें उस लॉ को फॉलो करना है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि कोई लॉ ना हो तो आप अपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें ऐसे लोगों को वोट दें, अपने एमपी के पास जाइए, उनसे कहिए कि ये लॉ जो है हमारी कम्युनिटी के खिलाफ हो रहा है या ऐसा चेंज आ रहा है, तो आप उनसे कम्युनिकेशन करके ऐसा लॉ ना बनने दें, अपने ऐसे लोगों को भेजें जो इस किस्म के लॉ में वोट ना दें। इस वक्त लुबैना ये नहीं कह सकती कि आया प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर ने सही किया था या प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ने सही किया था, या हम भी नहीं कह सकते। हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि जो चेंजेस आई हैं वो कैसे अफेक्ट करेंगी। हमारा वक्त कम है इसलिए हम वो पूछ लेते हैं, लुबैना वो कैसे अफेक्ट करेंगी। स्टूडेंट की बात कर रही थी आप, मेरा सवाल ले लीजिए, यानी जिसने 1 जनवरी 2000 लेट्स से दिसंबर 2023 को उसको वीजा मिला था, स्टूडेंट वीजा, वो अपने स्पाउस को अगर आज चाहे तो बुला सकता है, लेकिन जिसको 5 जनवरी 2024 में वीजा स्टूडेंट मिला था वो नहीं बुला सकता। एम आई राइट? That's correct, yes. Okay, thank you. Please carry on. So as I mentioned, there's changes from January 2025. So it will increase to 1,483 for anyone who's applying in London, and then outside of London, it will change to 1,136. Again, students, students jinki accommodation also pay hoti hai, they will have their amounts reduced. And all these changes will come effect from next year January, so it doesn't really affect you today, but agar apply karna hai, so probably this is the best time before changes come into force next year. Until then, the financial from university point of view से मैं अर्ज कर दूं नाज़रीन, अभी हमारी जो ट्यूशन फीसेस हैं ओवरसीज स्टूडेंट के लिए, उसमें कोई ऐसी प्रपोजल नहीं है कि उसके अंदर चेंजेस आएंगी। लुबैना बता रही है जो मेंटेनेंस कॉस्ट के आपको एक्स्ट्रा पैसे चाहिए होते हैं अदर देन जो आपकी ट्यूशन फीस है, ये उसकी बात कर रही है। सॉरी लुबैना, आई हैव टू इंटरप्ट यू प्लीज। No, that's fine. And again, remember, it's always important to remember that student visas don't lead to settlement. So you'll always have to make another application in the UK until you've completed at least 10 years in the UK from a student visa to be able to get settlement. Can we take quickly call, please? Yeah. जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, वक्त कम है, बोलिए जल्दी से। जी मुझे मेरा सवाल था कि I have my parents who come down every couple of years to UK with their own sponsors, वो उनके खुद के स्पॉन्सर हैं, उनके खुद के पैसे से आते हैं, उनका घर है खुद का, वो हमारे यहाँ पर आते हैं एंड एप्लीकेशन पे भी वो कहते हैं कि उनका बेटा यहाँ पे रहता है। तो अगर उनको लंबी वीजा के लिए यहाँ पर आना है वगैरह, एंड फॉर एग्जांपल आई एम ऑन लो इनकम, आई डोंट स्पॉन्सर देम बट दे स्पॉन्सर देमसेल्व्स बाय देयर ओन। वो हर 2 साल में आते हैं, 4-5 दफा विजिट के लिए। यहाँ पे उनको लंबा रुकना है, अगर फॉर एग्जांपल 5-6 साल 8 साल रुकना है अगर उनको, तो उसका क्या प्रोसीजर है? आई मीन दे हैव देयर ओन सेविंग्स, उनका खुद का घर है, बट फॉर देम टू कम हियर बाय देमसेल्व्स
ठीक है, वो प्रोसीजर क्या है? अच्छा मैं इससे पहले लुबना से पूछूं, आप ये बताइए कि जो लोग विजिट करने आते हैं, बुजुर्ग होंगे जाहिर है, उनके ब्लड रिलेशन बेटा बेटी को यहाँ पर रहता है जिनके पास वो विजिट करने आते हैं? जी, मैं उनका बेटा हूँ। अच्छा, अब उनके बेटे, ठीक है, मैं समझ गया। लुबैना से पूछ ले। लुबैना, क्विकली इफ आई कैन पुट, असल में अपने जो पेरेंट्स को स्पॉन्सर करने का कह रहे हैं, ये कि पेरेंट्स को आप स्पॉन्सर कर किस सूरत में कर सकते हैं? ये खुद बेसिकली लो इनकम पर हैं, तो ऐसा हो सकता है कि इनका कोई अजीज, इनका दोस्त हो जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले के जी वो आएंगे, तो वी विल स्पॉन्सर, इफ यू कैन आंसर क्विकली। और हमारे भाई, आप हमें प्रोग्राम के बाद फोन कर लें अगर चाहेंगे, तो हम लुबैना का नंबर आपको दे देंगे, यू कैन speak to her and get an appointment. Ji, please, Lubana. No, if you are going to sponsor your elderly parents to come to the UK, it's such a high threshold, so difficult to meet. And especially if you say कि कोई और sponsor कर रहा है पर मेरी low income है, absolutely no. I mean, why will they call them, your parents, to come to the UK? उनका क्या रिश्ता है? वो कहाँ रहेंगे? You can't show कि वो बुला रहे हैं लेकिन मैं रखूंगा लेकिन मेरी low income है. लेकिन लुबैना, अगर इनकी मिसेस, फॉर एग्जांपल, इनकी मिसेस साहिब सरवत हो, अच्छे पैसा रिच हो, और वो कहें जी मैं अपने इन लॉस को स्पॉन्सर करना चाह रही हूँ, तो इज इट पॉसिबल फॉर हर? It is, but it's going to be refused. You need to show why. Why can't your parents live in Pakistan? अगर आप इतने rich हो तो उनको पैसे देते जाओ पाकिस्तान में, they will have a comfortable life. Why do they need to come to the UK? Why do you need to be here? If you are rich and you have been sending money to them, continue to do so. But you need to show why is there a physical dependency now for them to be in the UK? ठीक है, I'll quickly take one more call, please. जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम साहब, मैं दोबारा फोन कर रहा हूँ। वो एक्चुअली मेरा सवाल था कि मैं स्पॉन्सर नहीं करता, वो खुद अपने पैसे से वो खुद आना है। वो खुद अपने पैसे से स्पॉन्सर, ठीक है। उन्होंने करेक्शन कर दी, वो कह रहे हैं इनके पेरेंट्स के पास अच्छे खासे पैसे हैं पाकिस्तान में या जहां इंडिया में जहां भी हैं, अब ये स्पॉन्सर नहीं कर सकते उनको, लेकिन वो अपना, उनके पास इतना है वो कि अगर ये बुलाएं यहाँ आके रहें तो उनका पैसा यहाँ पर इस्तेमाल करके इफ दे कैन कम, दिस इज व्हाट ही वाज सेइंग। Why do they need to come to the UK then? बिकॉज हो सकता है वो एक ही बेटा हो, यहाँ रह रहा हो, वो उसका फाइनेंशियल सही नहीं हो, वो वहां पर पैसा तो है, वो कहेंगे हम हमारा we cannot buy love. No, adult dependent applications are extremely difficult, and it's not enough to say कि मेरा इकलौता बेटा है तो मैं उसके पास रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ. It's just not enough. ओके, तो आई थिंक मेरा ख्याल है भाई आपको ऐसा करें कि अगर आप पर्सनली मिल लें तो मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर होगा। मे बी देयर माइट बी सम पॉसिबिलिटीज जहां पर आप को कहीं पर शायद वो मिल जाए। जाहिर है अगर उनकी मेडिकल कंडीशन कैसी है, पैसा है लेकिन मेडिकल कंडीशन ऐसी है कि नोबडी कैन लुक आफ्टर, और अगर पैसा है तो दे कैन अफोर्ड केयर वर्कर देयर इन पाकिस्तान व्हिच इज मोर चीपर देन हियर। सो देयर आर मेनी क्वेश्चंस एंड क्रॉस क्वेश्चंस, सो मे बी you can get some light in it. Lubena, thank you very much. We very run short of time. We've got just 2 minutes remaining. So I would take this opportunity to thank you for being in our program. And obviously, आपको हम अगर आप इजाजत देंगे तो अगले या किसी और प्रोग्राम में हम दोबारा आपको मदू करेंगे। सहरा, आप अगर कुछ क्विकली कहना चाहें तो हम मैंने लुबैना से बहुत सारे सवाल पूछने थे, लेकिन जिस काम के लिए हमने बुलाया हुआ था, चेंजेस इन द इमिग्रेशन लॉ, आई वांटेड हर आल्सो कि वो सब कुछ बता सके, जितना भी बता सकती है। पीछे कॉल्स आ गई। एनीवे लुबैना, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू, और इंशाल्लाह आई थिंक वी शुड हैव अनदर वन मोर प्रोग्राम विद यू, सो दैट जो हम अभी भी सवाल हमारे रहते हैं, वी वुड लाइक एन आंसर टू दैट एज वेल, और मे बी दैट कैन हेल्प आवर पीपल, और थैंक यू सो मच फॉर दैट। और यहाँ नाज़रीन, जी प्लीज गो अहेड लुबैना। No, I was just saying thank you so much for giving me this platform to speak, and for hearing your views, your viewers' views also. थैंक यू वेरी मच। और हम आपसे माजरत चाहते हैं, हमारे कॉलर्स काफी सारे आ गए। हमारे कॉलर्स को एक दफा फिर मैं रिमाइंड करा दूं नाज़रीन, ये जो हमारी मेहमान थी, इन्होंने जर्नल चीजें बताई हैं। आपको स्पेसिफिक एडवाइस प्रोफेशनल चाहिए तो आप इनसे राब्ता कर सकते हैं या किसी और सोलिसिटर से भी राब्ता कर सकते हैं। जहां तक पाकिस्तान की बात हुई तो मैं ये कहता हूं कि जरदारी भी नहीं रहेगा, नवाज शरीफ भी नहीं रहेगा, इमरान खान भी नहीं रहेगा। ये सियासतदान जो इंसान है ये फानी है, ये सारे चले जाएंगे।
जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान इंशाल्लाह कायम रहने के लिए ही बना है। हमें दुआ करनी चाहिए कि परवरदिगार आलम पाकिस्तान में जो भी हो, हमारे बहन भाई दोस्त अहबाब जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनकी जो मुश्किलात हैं, उनकी मुश्किलात से परवरदिगार आलम ख़त्म करे। अगर कोई उनके लिए फ़ायदेमंद है तो उसको हुकूमत दे, और अगर फ़ायदेमंद नहीं है तो उसको ज़लील ख्वार कर दे। आप तमाम देखने वालों को का शुक्रगुजार हूँ, और जिन्होंने फ़ोन किया उन सबका शुक्रगुजार हूँ। आपने फ़ोन किया, आपके लिए दुआ करता हूँ।